के सुमिरन करो सदा दिन रात्रि। मनुष्य जन्म पाए के आगे रुका बहुत गनेरा। याम यातन 84 फेरा जाकर नाम आया। निस दिन काले रोए के सुमिरन करो सदा दिन रात्रि। मनुष्य जन्म पाए के जो कुछ बने सो आगे बनाए। आगे कुछ बनना पाए। लागे सतगुरु चरण आए। मान में निश्चय के सुमिरन करो सदा दिन रात्रि। मनुष्य जन्म पाए के सोमनाथ सतगुरु का दासा। नाम सुमिरन श्वासो श्वासा। छोड़ दिया परम की आशा। है कई सतगुरु जान के सुमिरन करो सदा दिन रात्रि। मनुष्य जन्म पाए के सुमिरन करो सदा दिन रात्रि। मनुष्य जन्म पाए के अभी दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया एक अच्छे महात्मा हो गए। निजामुद्दीन उन्हीं के नाम से स्टेशन का नाम भी रखा गया। In Delhi, there was a great saint Nizamuddin Aulia. There is now a railway station also by his name. वो अच्छे कमाई वाले महात्मा थे। उन्हीं के एक गुरमुख शिष्य, मुख्य शिष्य अमीर खुसरो, जो दुबई के बादशाह के पास में नौकरी करते थे, वहाँ उनकी बादशाह से कुछ अनबन हो गई। वो मंत्री के पद पे थे,
तो वहाँ से वो अपने सारी संपत्ति लेके इंडिया की तरफ चले. One of his disciples, Amir Khushro, he was a minister with the king of Dubai, and there was some thing that uh, uh, where he did not agree with the king, and he decided to return to India. So तो, he returned with all his belongings. तो वो अपनी सारी संपत्ति एक 17 ऊंट के ऊपर लोड करके और एक ऊंट के पूंछ में एक का रस्सी बांध के सबसे आगे का ऊंट का रस्सी पकड़ के वहां से चल के आ रहे थे. So he was returning, and all his wealth had been put on 17 camels, and he was returning with. He had tied all the camels together, one to the other, and he was in the first camel, and he was pulling them as he returned to India. तो कहते इस तरह आ रहे थे. यहाँ पे क्या हुआ, किसी एक ब्राह्मण की लड़की की शादी थी और किसी ने कहा निजामुद्दीन औलिया बड़े अच्छे महात्मा हैं, आप उनके पास जाओ, कुछ आपकी मदद करेंगे. So here at Nizamuddin Aulia's place, there was one Brahmin, and someone had told the Brahmin he needed money for getting his daughter married. So someone had told him that you go to Nizamuddin Aulia and he'll help you get the money. तो लोगों की बात मान के वो फकीर के पास में वो ब्राह्मण आया. तो देखता है कि एक सादा सा मकान है, झोपड़ी है, और महात्मा उसमें बैठ के ध्यान करते थे. आके नमस्कार किया और महात्मा ने आने का कारण पूछा, तो उसने अपनी परिस्थिति का बयान किया कि मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आया. So listening to them, he went to Nizamuddin Aulia. When he reached the house of Nizamuddin Aulia, he saw that it was a very ordinary cottage that he was staying in, and he used to sit there and meditate. So the Brahmin came and told him that he wanted help, and that is why he had come to him. क्योंकि ब्राह्मण गरीब था, उसके पास जमीन भी नहीं था और लड़की के शादी के लिए कोई कर्जा देने को तैयार नहीं था. तो किसी ने ये प्लान बताया और वो औलिया के पास चला गया. तो औलिया ने कहा कि अच्छा भाई रुको, 2 दिन 3 दिन रुको, अगर कोई शिष्य कुछ चढ़ावा दे के जाता है या कुछ सेवा देता है तो मैं आपको दे के भेजता हूँ. So that Brahmin was a poor Brahmin. He did not have any land holdings also. So nobody was willing to lend monies to him also. So he had therefore come to Nizamuddin Aulia seeking some monetary help. Now Nizamuddin Aulia told him that okay, you sit and wait. I don't have anything to offer you right away, but maybe one of my disciples may come and they may offer you something. तो वो ब्राह्मण 3 दिन तक रहा. तो देखता है कि कोई आता है तो गरीब लोग ही आते हैं, कोई चढ़ावा नहीं, कुछ नहीं, और ऐसा कोई बड़ा उसको आदमी लगा नहीं कि औलिया को कुछ सेवा दिया हो. So that way the Brahmin stayed 3 days with Nizamuddin Aulia, and he observed that whoever was coming to take his darshan, they were all kind of poor people, or not. He did not notice anyone who was very wealthy and who came and gave a lot of seva to Nizamuddin Aulia. तो 3 दिन रहने के बाद जब कोई आशा नहीं दिखी तो वो ब्राह्मण कहता, मैं महाराज मैं यहाँ बैठूंगा तो मेरी लड़की की शादी फिक्स किया है, वो कैसे होगा, मैं और कई जगह जाके देखता हूँ. So after he sat for 3 days, he felt that it is not likely for him to get any monies like this. So he told Nizamuddin Aulia that it's okay, I will try somewhere else to get some money, but I cannot keep waiting like this. तो
निजामुद्दीन ने सोचा बेचारा 3 दिन तक रहा, अब जाने के समय खाली हाथ कैसे भेजें, और उनके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपना पुराना जूता था चमड़े का, उसी को कपड़े में लपेट के दिया कि ले जा, कहीं रास्ते में बेच के नाश्ता वास्ता करके जाना। So Nizamuddin Aulia felt that it is not right to leave, have this Brahmin leave empty-handed, and there wasn't anything really to offer him. So he took one of his leather shoe, and he wrapped it in a cloth and he gave it to the Brahmin. And he told him that on your way back, maybe you try to sell this, and you may get some money to eat something or have some snacks while you're returning. तो ब्राह्मण वो लपेट के लेके जा रहा था, और वहाँ से अमीर खुसरो के जो है सवारी आ रही थी। जब 7-8 किलोमीटर जंगल में गया तो सामने से देखा कि बहुत सारे ऊँट लेके कोई आदमी आ रहा है। तो उनके तब थोड़ा दूर रह गया, तब अमीर खुसरो को एक तरह से सुगंध आने लगी और थोड़ा खुशी होने लगा मन में। तो इधर उधर देखते हैं तो कोई फूल नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये सुगंध कहाँ से आ रही। तो बाद में जब वो ब्राह्मण उनके पास से आगे निकल गया तो सुगंध पीछे से आने लगी। तब उनको शंका हो गया कि इस ब्राह्मण के पास कुछ है। So when that Brahmin was walking back home, as he was returning from the other side, Amir Khusro was coming with his caravan of 17 camels. And when they neared each other, Amir Khusro started getting this wonderful fragrance, and he started feeling a sense of happiness. And he looked here and there to see what was it that was giving him that fragrance and that feeling of well-being and happiness. But he could not notice anything. And as that Brahmin passed him, as they crossed each other, that fragrance started coming from behind. So then Amir Khusro felt that it must be something that this Brahmin is carrying, which is giving me that fragrance and that happiness. तो वो भाग के गए, वो ब्राह्मण को पकड़ा, कहते भाई तू कहाँ से आ रहा है। तो वो कहता है मैं निजामुद्दीन औलिया के पास गया था कुछ आशा लेके, 3 दिन तक रहा, लेकिन मेरा तकदीर ही ऐसा रहा कि कोई आया नहीं, कुछ दिया नहीं, और मेरी ऐसी ऐसी हालत है, मैं परेशानी में कुछ उनसे मदद के लिए गया था। So Amir Khusro ran towards that Brahmin, and he stopped the Brahmin and asked him from where he was coming and where he was headed. So then that Brahmin told him that he was coming from Nizamuddin Aulia's place, and then he related what had happened and that he had gone there hoping that Nizamuddin Aulia would give him some money for getting his daughter married. But then he had waited for 3 days and nothing had happened. And then finally he had to leave from there. तो मैं वापस आने लगा तो उन्होंने अपना जूती दिया है, बूट पुराना जूता दिया है, और वही मैं लपेट के लेके जा रहा हूँ। बोले किधर है, तो उन्होंने निकाल के दिखाया, बगल में ही रखा था, दिखाया। तो कपड़ा खोल के देखते हैं तो बोलते हैं तो हमारे पीर की माने निजामा गुरु की है। तो बाद में पूछते हैं कि इसको तू बेचेगा, तो बोले महाराज उन्होंने बोला इसको बेच के नाश्ता करके जाना। मैं तो शर्म के मारे किसी को देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि पुराना बूट है, इसका क्या कोई देगा, तो अगर आप लेते हैं तो ले लो। So then he told him that he had not got anything, and then finally Nizamuddin Aulia had given him his old shoe, and that is what he was carrying with him. So Amir Khusro asked him to show that shoe, and
that Brahmin had tied that shoe around his waist. He removed it and he showed it. And Amir Khusro recognized that indeed it was his master's old shoe which was there. And that, so he asked him whether he would be willing to sell that shoe. And then the Brahmin said, actually, this shoe had been given to him so that he could sell it somewhere and get something to eat, some snacks to eat while returning. But it was an old shoe, so he was feeling embarrassed to even offer it to anybody to sell. तो बाद में निजामुद्दीन अपना अमीर खुसरो कहते, भाई देख, मेरे पास 17 ऊँट धन है, उसमें एक ऊँट धन मेरे लिए जीवन के लिए काफ़ी है, बाकी जो ये 16 ऊँट धन है, मैं इस जूती के कीमत में मैं सब आपको दे रहा हूँ, आप इसे लेके जाओ. So then he offered it to Amir Khusro, and Amir Khusro said that, look, I have my wealth stacked up on all these 17 camels, and the wealth on one camel is enough for my lifetime. So I will retain one camel load of my wealth, and the rest of the 16 camels I can give in exchange of this shoe. तो बाद में उन्होंने एक ऊँट जो है अपने लिए रख के बाकी जो 16 ऊँट का रस्सी उसको ब्राह्मण को पकड़ा दिया कि भाई ले जा, तू लड़की की शादी कर ले. तो वो बहुत सारा धन था क्योंकि वो बड़े पदवी पे थे और एक अमीर घर में पैदा हुए थे, तो दादा परदादा से उनकी संपत्ति थी. तो वो ब्राह्मण बड़े खुशी खुशी में गया और जा कर के लड़की की शादी किया, एक अच्छा बड़ा मकान बना लिया और एक बड़ा धनी परिवार हो गया. So Amir Khusro took out one camel, and the rest of the 16 camels were tied. So he gave the rope of that 16 camels to this Brahmin in exchange of his master's shoe. So that Brahmin was extremely pleased with the offer, and he took those 16 camels. And Amir Khusro was a very wealthy person. By inheritance also he was very wealthy, and he was also working at a very high position. So he had a lot of wealth on those 16 camels which he was carrying. And the Brahmin happily took all that and got his daughter married off very well, and he made a big house for himself, and his whole family was also very prosperous thereafter. तो कहते हैं कि इस तरह से वो जूता लेके आश्रम में गए और जाके हाथ पैर धो के वो जूता को अपने सिर पे रख के लेके गुरु के दर्शन के लिए गए और ले जा करके उसको खोल के उनके सामने रख दिया. तो निजामुद्दीन औलिया हंसे, कहते, अरे ये कहाँ मिल गया तुझे. So then Amir Khusro took that shoe of his master and he went to the ashram of his master. And there, after washing his hands and feet, he carried that shoe on his head and he went and met his master. And then he offered that shoe to his master. So Nizamuddin Aulia asked him, where did you get this shoe from? तो कहते हैं, इसको मैंने रास्ते में आपने उस ब्राह्मण को दिया था और वो लेके जा रहा था, तो मैंने इसे रास्ते में खरीदा. तो बोले कितने में लिया? तो बोलते हैं 16 ऊँट धन दे के लिया. तो कहते हैं बहुत सस्ता मिल गया था. So then he asked him where you got the shoe from. So Amir Khusro told him that I met this Brahmin on the way and he was carrying this shoe which you had given him, and I bought it. I gave him 16 camels of my wealth of 17 camels, and with that in exchange I bought this shoe. That's how I got it. So Nizamuddin Aulia told him, okay, you got it very cheap. तो कहते हैं कि इस तरह से गुरुमुखों को, जिन्होंने गुरु को अंदर प्रकट किया, उनको पता है गुरु किस हस्ती का मालिक है
तो वो गुरु की हर चीज़ की कदर करते हैं। एक बार बेबी रुक्को को बेबी लाजो को सावन सिंह महाराज ने बोला, बेबी पगड़ी दिया था बांधने के लिए, तो महाराज खोल के उसको एक करने लगे तो एक जगह थोड़ा ऐसा फटा था, तो कहते बेबी ये पगड़ी तो फटी हुई है, इसको फेंक दे, दूसरा लेके आ। तो बेबी उसको ऐसा मोड़ के अपने बगल में ले लिया, जाके दूसरा लेके आई, और वो ऐसे ही रखा था बगल में। तो लेके आके महाराज को दिया, तो महाराज वो आने के बाद कहते, अरे बेबी उसको क्यों रखा है, वो तो फटा हुआ है, फेंक दे। नहीं महाराज, इसको मैं अपने अलमारी में संभाल के रखूँगी। तो महाराज कहते हैं, शाबाश बेटी, क्योंकि मैं भी एक बार आगरा गया था, तो ये चाचा जी मुझे प्रसाद और एक साल दिए थे, माने जो स्वामी जी महाराज जी के बाद बैठे थे, हाँ प्रताप सिंह, वो दिए थे, और मैं वो प्रसाद तो खा गया, लेकिन साल आज भी संभाल के रखा है। मैं जब नामदान देता हूँ तो उसको अपने ऊपर ओढ़ के थोड़ा टाइम ध्यान में बैठ के और फिर नामदान देता हूँ। So that way the Gurumukh disciples of the masters, they have seen their radiant form within. They understand the importance of the masters and their belongings, and they really care and value the belongings of their masters. So like that, in at the time of Savan Singh Ji Maharaj also, baby Rukko, na? लाजो Baby Lajo. Baby Lajo, she was helping him tie his turban, and when he saw that cloth, he opened the cloth of that turban, he saw that it was torn at a place, and he told Baby Lajo that this turban is torn, this cloth is torn, so you discard it and bring a new cloth. And then she folded it carefully and kept it with her, and she brought another cloth and tied the turban. So he noticed that she was keeping it very carefully to be kept in the cupboard. So he said, why are you keeping that torn cloth? You discard it. So she told him that she wanted to keep it with her as a very priceless belonging of his. And then he was pleased, and he told her that it is good that you value it, because likewise even I had been given prasad by Chachaji, that he was the successor of Swamiji Maharaj. So he said that I was also given a shawl and prasad from Chachaji, and I ate that prasad, and I have always kept that shawl. So whenever I give initiation also, I wear the shawl and I sit for meditation for some time, and then I give initiation. हाँ, तो कहते इस तरह से संतों को संतों की चीज़ की कदर होती है, और समय वातावरण बहुत अच्छा है, शांत है, हमें इससे फ़ायदा उठाने चाहिए, हम भी आंख बंद करके भजन सुमरन से जुड़े। So that way all the Gurumukhs, they care for the possessions of their masters. The time is good and the atmosphere is quiet, so let us make the most of it and sit for meditation.